अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ गेट रेडी विद मी। मैं जनरली अपने गेट रेडी विद मीज़ अब इंस्टाग्राम पे किया करती हूँ, बट आज मैंने जनाब फिल्म करना था बैक टू बेसिक्स की एक एपिसोड। आई वाज गोइंग टू फिल्म ब्रॉन्जिंग वर्सेस कॉन्टोर आज की वीडियो में। एंड जनरली अब तक मैं जितने भी बैक टू बेसिक्स की एपिसोड्स फिल्म किए हैं वो मैंने बैठ के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, डेमोन्स्ट्रेट कुछ नहीं किया है सच। लेकिन ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोर का फ़र्क एक्सप्लेन करने के लिए एंड इट्स काइंड ऑफ अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, सो मैंने सोचा कि मैं इसको डेमो कर लेती हूँ। सो वो हिस्सा मैंने फिल्म करना ही था अपने आप को मेकअप करते हुए, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट डू एन एंटायर गेट रेडी विद मी, स्पेशली बिकॉज आई हैव सम न्यू प्रोडक्ट्स टू टेस्ट आउट। सो इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स एज वेल जो मेरी कलेक्शन में बिल्कुल नए हैं। First and foremost, I have the Zayfied Lucent Matte Longwear Foundation. This is medium to full coverage and is recommended for all skin types. I'm in the shade 01 Malai. Abhi Zayfied ने launch किया. I'm very excited to test it out for the first time. इसके अलावा another product that I will be using for the first time is Shopaarel का concealer. मैंने ख़रीदा in the shade 1. And it's very very light. I will be using it to highlight today. उसके अलावा a third product that's brand new to my collection, ये Sapphire का eyebrow tint है, eyebrow pen है इस तरह का, and it's clearly too light for my eyebrows, so हम इसको set करेंगे with a darker color का powder. But anyways, these are the 3 brand new products in my collection जो आज test out करेंगे. उसके अलावा भी generally the collection I've pulled out for this get ready with me is relatively new to my collection. So yeah, without further ado, let's jump right into this get ready with me. अच्छा जी, सो आई एम गोना पुट माई हेयर बैक फॉर अ वाइल नाउ, और मेरा जो फोर हेड है वो 5 हेड लगेगा फॉर द रिमेनिंग ऑफ दिस वीडियो जब तक मेरे बाल पीछे हैं. आई हैव रियली बिग फोर हेड, बट दैट्स गोइंग टू हेल्प मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर इवन बेटर. वो वीडियो मैं पहले लगाऊंगी, सो दैट वीडियो शुड ऑलरेडी बी अप. आप वो जाके देख सकते हैं. आज की वीडियो में वो वाला सेक्शन मिसिंग होगा. बट हम शुरू करेंगे मॉइस्चराइज करने से. आई एम नॉट गोइंग टू डू अ वेरी लाइक आर्टिकुलेट आई लुक टुडे. सिंपल सी आई लुक करेंगे, इसलिए आज मैं अपना बेस मेकअप पहले करूँगी. आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद प्राइमिंग माई फेस. सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र. दिस हैज़ बिन माई गो टू मॉइस्चराइज़र फॉर माई लाइक फेस बिफोर मेकअप. एंटाइस का प्राइम मॉइस्चराइज़र, आई लव इट. थोड़ा सा थिक सा है, लेकिन ड्यूरिंग द विंटर्स आई हैव रियली ड्राई स्किन, सो इट रियली हेल्प्स मी आउट. वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों अपने आप के लिए इतनी मुश्किल बनाई हुई. आई हैव दैट ब्यूटीफुल वैनिटी मिरर बिहाइंड मी, सो व्हाई डोंट आई पुट दैट राइट हेयर. सो आई विल बी राइट बैक. मैं ज़रा वैनिटी मिरर यहाँ ला के सेट कर लूँ. ओके ग्रेट, दिस इज़ सो मच बेटर. आई हैव एन एक्चुअल मिरर इन फ्रंट ऑफ मी नाउ. ठीक हो गया जी. आई हैव प्राइम्ड माई फेस. इसके बाद नो, आई मॉइस्चराइज माई फेस. इसके बाद वो मॉइस्चराइज़र आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस गाय. दिस इज़ एन ओल्ड फेवरेट बट आई रिसेंटली रीपर्चेस्ड इट. ये है निक्स का एंजल वेल. पड़े इसके अंदर जो थोड़ा ऑयल्स है वो सेपरेट हो जाता है, सो आई डू लाइक टू मिक्स इट इन रियली वेल. ओके, सो प्राइमर के बाद फाउंडेशन से पहले आई वुड पुट सम कलर करेक्टर अंडरनीथ माई आईज. चले जी, कलर करेक्शन हो गई है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग. इट इज़ लाइक फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल. बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टर्डी मटेरियल है. यू हैव अ सॉफ्ट टच कैप एंड यू गेट अ पंप विच इज़ वंडरफुल. जो ऑनलाइन इनके शेड्स हैं उनमें मलाई लुक्स वेरी लाइट, एंड आई एम नॉट द फेयरेस्ट कम्प्लेक्शन इन पाकिस्तान. लाइक आई वुड से कि फाउंडेशंस में अमूमन मेरा 2nd या 3rd शेड होता है इंटरनेशनल फाउंडेशंस में. सो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था मलाई फॉर मी. लेकिन कुछ स्वॉचेस में इट सीम्ड लाइक द राइट शेड. जो अगला शेड है वो मुझे बहुत डार्क लग रहा था अपने लिए, सो आई डिड एंड अप बाइंग द लाइटर शेड एंड दिस इज़ एक्चुअली द परफेक्ट मैच फॉर मी. बहुत अच्छा शेड मैच है. आई डिड शेड मैच इट लास्ट नाइट ऑन इंस्टाग्राम जब मैं इसको लाइक अनबॉक्स कर रही थी, हॉल करी थी ओवर देयर. So I'm just going to dot it all over my face. एक पंप लिया है मैंने, barely a pump. It does say medium to full coverage, so I'm gonna start low. थोड़ा सा मैंने रहने दिया अपने हाथ के पीछे, ठीक है. And I am going to use a beauty blender which is basically my tool of choice always with foundation.
This or Tati Beauty Blendful type का sponge, those are my two preferred applicators. Okay, I will take whatever is left on my hand and drag it down my neck. Okay ji, thoughts, first impressions. So, first impression wise, I think the one pump that I used gave me a beautiful light medium coverage, like medium I would say. It is not entirely matte, it does have some luminosity to it, thoda thoda glow मेरे cheekbones को मिल रहा है. I like that. So I like the name, the Lucent Matte Longwear Foundation. I get it now. एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये नोट किया है कि because the foundation is not very serum like, थोड़ा thick formula है तो it does dry down quickly. So you do have to work really quickly. या फिर आप आधे चेहरे पे पहले डॉट करें, वहाँ blend कर लें, फिर दूसरी तरफ डॉट करें, blend कर लें. Because by the time I got here, I really had to work fast. क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही थी. That being said, I have absolutely no complaints when it comes to the finish of it. बहुत अच्छी फिनिश लग रही है. दूर से देखूँ या I have a magnifying mirror है या करीब से देखूँ, अमूमन जो मैट फाउंडेशंस या लॉन्ग वेयर फाउंडेशंस होती हैं वो मेरे नोज़ पे क्योंकि थोड़ी सी ड्राई स्किन है, यहाँ पे ड्राई स्किन है तो क्लिंग कर रही होती है, केकी लग रही होती है अगर बहुत करीब से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखा जाए तो. बट राइट नाउ इट्स नॉट क्लिंगिंग टू एनी ड्राई पैचेस. इट लुक्स very flawless and like in the best possible way. बिल्कुल केकी नहीं लग रही है, मसनूई नहीं लग रही, आर्टिफिशियल नहीं लग रही, थोपी हुई स्किन पे कुछ नहीं लग रहा है. It looks very natural and yet my skin looks very perfected in a way. I think it's going to be a really big hit in my collection. देखते हैं, we shall see. This was just my first impression. इसके बाद जनाब कुछ कर लेते हैं concealing. So I have Beautify by Amna का concealer in the shade 05. जो मेरी आँखों के नीचे वाला डार्क हिस्सा है इस पे मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी, लाइक अ लिटिल बिट, नॉट टू मच. चल जी, अंडर आइज कंसील हो गए हैं. आई विल हाईलाइट अ लिटिल बिट. ये जो मैंने कंसीलर ख़रीदा है शॉपरेल का, आई एम अप्लाइंग इट ऑन दिस पार्ट ऑफ माई फेस टू काइंड ऑफ हाईलाइट. ये शेड लाइट शेड मैंने लिया ही इसलिए है. शॉपरेल इंडियन ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स कोरिया में बने होते हैं और मैंने बहुत दफ़ा इंडियन मेकअप आर्टिस्ट को ये कंसीलर यूज़ करते हुए देखा है एंड इट लुक्स वेरी फ्लॉलेस वेन एवर दे अप्लाई इट ऑन देयर क्लाइंट्स. तो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई. I kind of like it when this part of my face is a little more highlighted than the rest of my face. I will say it does look a little heavy. Like मैं बहुत ही light layers of makeup enjoy करती हूँ, तो it does look a little heavy. Not too much. लेकिन थोड़ा सा heavy लग रहा है, जिस तरह का pro makeup artist use करते हैं चीज़ें. लेकिन that being said, it just filled in my pores somehow and it looks like, again, it did not cling to the dryness क्योंकि this is the exact area जहाँ पे dry patches होते हैं. So far so good, I like it. इसको balance out करना ज़रूरी है, so I'm going to take again that light shade थोड़ा थोड़ा like on the center of my face. I'll also use it on the sides of my nose a little bit, because that's how practically I contour my nose if I ever do that. Alright you guys, I have no complaints. I really like this concealer. Like इस तरह का concealer for special occasions when I'm getting ready and I want to look my best. It would be really nice because it does perfect me. I might not like it for day to day, but like for those special occasions, this might be a very nice concealer. Again, it's a first impression, so देखेंगे. बहरहाल, now I'm gonna go film the contour and bronzer वाली video, and when I'm back, I would be like,
more snatched. So उसके बाद बाकी का मेकअप करते हैं. चलिए जी, I'm back. I have contoured my face and I hope my face looks a little more proportionate now. इसके बाद मैंने चेहरा सेट करना है, but before that let's apply some blush. ये है जनाब Entice Cosmetics का Cheek Charms. I'll use a little bit of this on the back of my hand and then I'll use a brush. Bit of warm सा मज़े का shade है, which kind of will blend into the bronzer. And I'll just use a brush to blend that out. Chale ji, looks nice. I am loving the finish of the foundation through and through. Really pretty, really nice. Smile lines में सिर्फ इस साइड पे थोड़ा सा sink in की है, but मैंने बहुत देर से set नहीं की. So I am now going to set that. मैं ले रही हूँ जनाब Laura Mercier का tried and trusted powder for underneath my eyes. So just this area I will set with the Laura Mercier ka powder. Acha, and for the rest of the face I'll just do a light dusting with a brush. Okay, so now to give my like center of the face a more highlighted look, मैं ले रही हूँ Jaclyn Hill का brightening powder in the shade Brightening Lilac. ठीक है, on my beauty blender, and I will apply some like right here. Okay, I'm not really baking. I won't let it sit on my face for too long. I'm just removing the excess now. So now I'm just going to add a light dusting of bronzer and blush on top of this powder. Highlighter के लिए I'm using my Pat McGrath का highlighter. Okay जी, अब Sapphire का brow pen try कर लेते हैं. It has a really nice combed felt tip, so I think it's going to be nice for like hair-like strokes. लेकिन it is definitely too light for me. Yeah, it's too light for me. बहरहाल यहाँ से I'm gonna give like the strokes upwards. And then over here I will start drawing them downwards. I'm taking the dark brown shade from my Viseart palette and I'm just going to set the liquid in that felt tip pen. Definitely I will say कि वो felt tip का जो wet सी base बन गई थी उसकी वजह से पाउडर ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्राउज के साथ चिपक गया है. That has given the powder a nice base, I would say. So जनाब, thoughts on the brow pen. Sapphire should definitely expand their shade range. इसमें बहुत अच्छी shade range नहीं है and a lot of these are very light. Product अच्छा है, but it's definitely a two-step process with something like this. उससे ज़ाहिर है ज़्यादा ही convenient है to use a brow pencil and be done with it. But बहरहाल, not a bad product. I would like more shade selection in that product. Anyways, for my eyes, I want to do something super quick, like super quick. So I do have the Colorboard palette from Beautyglazed. इनमें से I'm trying to find a shade that would just get the job done. So इसका ये जो blue वाला board है, इसमें से I'm taking this pinky सा peachy सा color. मैंने by the way eyes को prime तक करने की ज़हमत नहीं की. I did not put on a base, but the color is still showing up because these eyeshadows in the Colorboard palette are really nice. बहुत अच्छा pigment है इनका. उसके बाद I'm just going to take this pinky सा shade in the green board and we'll just apply it all over the lid with my fingers. इसके बाद I'll take Sapphire का ही brown eyeliner and waterline के साथ साथ इसको smudge कर रही हूँ. Also smudging some on my outer corner and we'll just use my fingers to blend that out. See, super quick, super simple, and we're done. We'll use the same brown and put it in my waterline. Mascara लगा लेते हैं. This again is by Sapphire. This video is not sponsored by Sapphire, by the way. I'm just going to line my lips now. This is Love Bug from Colourpop.
इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जनाब सैफायर का हेडस्ट्रॉन्ग लिक्विड लिपस्टिक। So that is it जनाब, that is the look all done. My thoughts on the two new products that I tried today. Zay Beauty की foundation, दोनों ही products ने मुझे बहुत ज़्यादा impress किया है. The Zay Beauty foundation is looking absolutely flawless on the skin. I really like the way it looks. Cakey नहीं लग रही है, बहुत velvety सी skin लग रही है, बड़ी smooth, poreless, but not cakey. It does not look artificial. It does not look thopi hui foundation. None of that. It's not clinging to the dry patches. It's like, it's, you know, it's glamorous in the most natural possible way, if that makes any sense. Really impressed with this. अब इसका wear check करना होगा, उसके लिए मैं किसी दिन सुबह इस foundation को लगाऊंगी, अभी तो बहुत रात हो रही है. Same goes for the highlighter, like not the highlighter, the concealer जो मैंने highlighter के तौर पे apply किया है. Like I was expecting कि given the dryness of my skin these days, यहाँ पे cakey लगेगा, and like I said in the beginning कि थोड़ा सा ज़्यादा coverage लग रहा है, but in the most beautiful way. Like it looks very, again, this part of my face looks poreless, and it looked like that without a pore filling primer and without putting on a powder on top. जब तक मैंने powder नहीं लगाया हुआ था तब भी this part of my face looked very poreless, and that was after I applied this concealer. So again, very happy with the concealer as well. And that was it for today's Get Ready With Me. I hope you guys enjoyed it. And yeah, I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.